Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Shruti. So, hope you all are doing well. So, in this video, we learn the next method of solution of equations chapter of numerical analysis, semester 6th. So, in this method, Regula Falsi method, or we can say it false position method. This method is similar to the bisection method that we have studied in the previous videos. So now we are learning Regula Falsi method. This method is almost similar as I said. So the basic difference between two methods, that is bisection method and Regula Falsi method, is that the mean of Regula Falsi method are represented by this formula: x1 is equal to a of f of b minus b of f of b minus f of a, where a and b are two real numbers such that f of a and f of b are of opposite signs, that we have studied in the working method of the bisection method earlier. So we shall continue with the question number 1. जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इसके बीच में क्या ही मेजर डिफरेंस है. द ओनली डिफरेंस एज आई सेड इज द मीन. इन द बाइसेक्शन मेथड आई कैन राइट फॉर यू द बाइसेक्शन मेथड mean is x1 is equal to a plus b by 2, simply as we calculate the mean in the earlier classes. So mean is changed by x1 is equal to a f of b minus b f of a upon f of b and f of a, where a and b are two real numbers such that f of b and f of b are of opposite sign. Clear? So we should do the first question. Solution. The given equation is f of x. We can write this equation. So in the question they said that solve by false position method to find the root of the equation x cube plus x minus 1 is equal to 0 in 4 steps up to 3 decimal places. So Regula Falsi method or false position method is same. बस ओनली डिफरेंस इसके बीच में है सिर्फ इसके पोजीशन का जो यहाँ पे लगाया है. दिस मेथड इज सिमिलर. आपको क्वेश्चन में रेगुलर फाल्सी मेथड भी कह सकते हैं या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला कि रूट हमने फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का ओनली 4 हाइट्रेशंस में, मतलब हमने सिर्फ 4 अप्रॉक्सीमेशंस निकालनी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी जो 4 आइट्रेशंस आएंगी वो सेम होनी चाहिए. जो उसका मीन होगा वो सेम होएगा. मतलब x1 सेम होना चाहिए x2, x3, x4, जो भी 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगी x3 और 4 का सिमिलर ही होएगा अप्रॉक्स. ओके. सो गिवन इक्वेशन इज f of x is x cube minus x minus 1 is equal to 0. Now if we put a as 0.5 and put it in the equation, so 0.5 cube plus 0.5 minus 1, we get minus 0.375, which is less than 0. And similarly we put b as 1. b as 1, we get answer 1 cube plus 1 minus 1 is 1, that is greater than 0.
Now f of a and f of b are of opposite signs, so we can write, since f of 0.5 and f of 1 are of opposite sign, therefore root lies between 0.5 and 1, राइट। उसके बाद हम आइटरेशन नंबर 1 पर फॉर्म करेंगे। ए बी हमारे पास आ चुका है, सो आइटरेशन 1, A is 0.5, B is 1. So we calculate the mean. This is the main difference between the Regula Falsi and the false position method in the mean. So we calculate mean x1 is equal to, अब यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे है a इंटू एफ ऑफ बी। नाउ a हमारे पास था 0.5 और f ऑफ b मतलब b को हमने 1 लिया था, अगर उसमें हमने फंक्शन पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आया हमारे पास। सो f ऑफ b क्या होगा हमारे पास 1 माइनस b क्या था 1 इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए हमारे पास 0.5 था, अगर हमने फंक्शन में पुट किया हमारे पास ये आंसर आया। सो वी कैन राइट 0.375, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, एंड अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी हमारे पास ये था, एफ ऑफ ए हमारे पास ये है, सो माइनस माइनस प्लस 0.375, वी गॉट द आंसर 0.6364। उसके बाद हमने फंक्शन में पुट करना है, जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में स्टेप्स करते थे, हम सिमिलर ही वैसे है, सिर्फ इसमें आपको मीन का ध्यान रखना है, बाकी सारे सिमिलर हैं स्टेप्स इन दी रेगुलर फाल्सी मेथड। उसके बाद हम फंक्शन में पुट करते थे, जो बाइसेक्शन मेथड का हमने वर्किंग मेथड स्टडी किया था उसमें हम मीन निकालने के बाद फंक्शन में पुट करते हैं। सो वी कैन पुट 0.6364 इन दी फंक्शन in the given equation is 0.6364 whole cube plus 0.6364 minus 1. We get the answer minus 0.1058, which is less than 0. Now f of a हमारे पास है 0.375. So f of a into f of x1 minus minus is plus which is greater than 0. अगर ये दोनों फंक्शन ग्रेटर देन 0 होते हैं तो हम रिप्लेस करते हैं a को एज x1, मतलब a को हम रिप्लेस करेंगे x1। सो सेट a इज इक्वल टू x1, सो रूट lies between 0.6364 and 1। उसके बाद हम सिमिलर सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। आइट्रेशन 2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। आइट्रेशन 2 ए हमारे पास है 0.6364। सो आइट्रेशन 2 में हमारे पास ए आ गया 0.6364 एंड बी इज़ 1। सो वी कैलकुलेट सिमिलर मीन x2 इज a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। From the previous we can write here f of a and f of b। हमारे पास जो पीछे f of a था 0.6364, उसका आंसर था -0.1058 एंड f of 1 हमारे पास आंसर था इज़ 1, सो 1। सो वी कैन राइट 0.6364 इंटू एफ ऑफ बी 1 माइनस
1 into f of a is 0.1058 plus f of b minus 1 plus 0.1058. We get the answer 0.6712. सो जब हमने f of x2 इक्वेशन में पुट किया हमारे पास आंसर आया 0.0264 minus 0.0264 which is less than 0, and we know f of a into f of x2 minus minus plus is greater than 0, so a would be replaced by mean, that is 0.6712 and b is 1. राइट उसके बाद जब हमने इसका मीन निकाला x3 जो हमने इस फॉर्मूले में इस अकॉर्डिंग पुट किया जो कि हमारे पास f ऑफ a था 0.6712, उसका आंसर आया था 0.0264 एंड f ऑफ b इज़ 1. सो वी गेट द मीन 0.6796 और हमने उसमें f ऑफ x3 पुट किया हमारे पास आंसर आया माइनस 0.0065 विच इज़ लेस देन 0. अगेन f of a into f of x3 into f of x is greater than 0, so a would be replaced by this. So root lies between 0.6796 and b is 1. So root lies between this. Again we calculate the mean a and b के अकॉर्डिंग. f of a हमारे पास था 0.0065 and f of b is 1. We calculate the mean 0.6817 and we put in the function. We get 0.0015 in negative, that is greater than 0, and f of a into again f of x4 is greater than 0, so a set a is equal to x1. So root lies between a is equal to 0.6817 and b is 1. So in the question they have said that solve the given equation by Regula Falsi up to 4th steps and up to 3 decimal places. So we can see that 0.679 and 0.681, राइट. हमने मीन चेक करना था x3 एंड x4. 0.68 and 0.679 is approximately same. Okay, so we can conclude up to 4th iterations and the question is solved. They have said that up to 3 decimal places x3 की वैल्यू हमारे पास आई 0.679 समथिंग एंड 0.681, almost same, right? So our question is solved. So we can now do the next method, that is the Newton-Raphson method, in the next video, which is very very important for the examination point of view. So thank you. If you like this video, please subscribe my channel Learn with Shruti and hit the like button. Thank you so much.